Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gariba, Hariba, Hariba, Hariba. Nitai Gora Hariba, 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 Hariba. Srimad Paramahamsa Faridabad Acharya Stotra Tadatsa Srimad is divine grace ISKCON Pandacharya Srila Abhacharya Vinda Bhakti Vasudeva Swami Maharaja Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Faridabad Acharya Stotra Tadatsa Srimad is divine grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kahao se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda se Advaita Gadadhara Sivasada se Gaura Bhaktavinda Ki Jai. Se Radha Krishna Gopal Gopinath Syama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Se Vrindavan Dham Ki Jai. Se Mathura Dham Ki Jai. Se Mayapur Navadvip Dham Ki Jai. Se Jagannathpuri Dham Ki Jai. Ganga Mai Yamuna Mai Ki Jai. Simati Tosi Devi Bhakta Devi Ki Jai. Samaveda Bhakta Vinda Ki Jai. Nitai Gaur Premanandi. All glories to the Samman devotees. All glories to the Samman devotees. All glories to the Samman devotees. All glories to Sisi Gora and Goranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So welcome to this morning Srimad Bhagavatam class. आप सबका स्वागत है आज प्रातःकालीन भागवत कक्षा में. And we are reading from Canto Srimad Bhagavatam, Canto 4, chapter 13, text what? Text 2 or text 3? What text? 2? Okay. हम श्रीमद् भागवतम से पाठ कर रहे हैं चौथा स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 2. The title of this chapter is The Descendants of Dhruva Maharaj. इस अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज के वंशजों का वर्णन. Vidura Huvacha Kete Prachetaso Nama Kasyapatyani Suvrata Kasyavavaye Prakyata Kutravasa Tramasata Vidura Huvacha Kete Prachetasu Nama
Kasyapatyani Subrata Kasyavavaya Prakyata Kutravasatramasata Vidura Huvacha Kete Pacheta Sonama Kasyapatyani Subrata Kasyavavaya Prakyata Kutravasatramasata. Could someone try? Yeah, could someone try? Okay. Yes, any more Mataji's to try? Okay, thank you very much. Word for word translation and purport by ISKCON Pandacharya. His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Okay. Please kindly respond to repeat. Vidura Hovacha. Vidura inquired. विदुर ने पूछा के who were कौन थे te de वे paseta saha प्रचेतसः the prasetas प्रचेतागण nama नाम of the name नाम के kasya तस्य whose किसके apatyani अपत्यानि sons पुत्र suvrata सुव्रता O Maitreya who have taken an auspicious vow हे शुभ व्रतधारी श्री मैत्र मुनि kasya कस्य whose किसके and bhavaye अन्ववाये in the family कुल में prakyataha प्रख्यातः famous प्रसिद्ध kutra कुत्र where कहाँ va वा also और भी satram सत्रम the sacrifice यज्ञ asata आसत was performed. संपन्न हुआ. Translation: Vidura inquired from Maitreya, O greatly advanced devotee, who were the preceptors? To which family did they belong? Whose sons were they? And where did they perform the great sacrifices? Please kindly responsibly repeat.
Vidura inquired from Maitreya, Vidur inquired from Maitreya, O greatly advanced devotee, who were the Prasetas? who were the Prachetas? To which family did they belong? To which family did they belong? Whose sons were they? Whose sons were they? And where did they perform the great And sacrifices? they performed the great sacrifices. Purport. The great sage Narada's singing in the previous chapter of three verses in the sacrificial arena of the Prasetas gave another impetus to Vidura to ask further questions. This purport is very short, so I'm just going to swift to text 3. Manye Maha Bhagavatam Narada Deva Darshanam Yena Prokta Kriya Yoga Parichaya Vidihare. Translation. Vidura continued, I know that the great sage Narada is the greatest of all devotees. He has compiled the Pancharatika procedure of devotional service and has directly met the Supreme Personality of Godhead. Please responsibly repeat. Vidura continued. I know that the great sage Narada is the greatest of all devotees. He has compiled the Pancharatika procedure of devotional service and has directly met the Supreme Personality of Godhead. Okay. Purport. There are two different ways of approaching the Supreme Lord. One is called Bhagavad Marg, or the way of Srimad Bhagavatam, and the other is called Pancharatika Vidhi. Pancharatika Vidhi is the method of temple worship, and Bhagavad Vidhi is the system of 9 processes which begin with hearing and chanting. The Krishna consciousness movement accepts both processes simultaneously and thus enables one to make steady progress on the path of realization of the Supreme Personality of Godhead. This Pancharatika procedure was first introduced by the great sage Narada, as refers to here by Vidura. Om Agyana Timirandasya Jnana Jana Salakaya Sakso Ummelitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stafetam Yena Bhutale Swayam Rup Kadamayam Dadati Swa Padantikam Bande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodata Godadai Puspavanto Chita Chandutamon Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, who are the Prachetas? Which family did they belong? What were the specific austerities they performed? And what ensued? What was the aftermath? Or amidst the austerities, what transpired? These are, okay, you have to do that. तो कौन है प्रचेतास? प्रचेतागण कौन है? क्षमा कीजिएगा. वे किस कुल के थे, किसके पुत्र थे और उन्होंने जो महान यज्ञ किया उसके उपरांत क्या हुआ? What about? You can also read the text for the purport for them. और उसके बाद विदुर ने कहा, मैं जानता हूँ कि श्री नारद मुनि समस्त भक्तों के शिरोमणि हैं. उन्होंने भक्ति की 5 रात्रिक विधि का संकलन किया है और श्री भगवान से साक्षात भेंट की है. Purport also, Maharaj? Purport also or translate purport? If you want, yeah. तात्पर्य, तो दूसरे श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से है. पिछले अध्याय में
प्रचेताओं के यज्ञ स्थल पर श्री नारद मुनि द्वारा 3 श्लोक गाए गए। 3 श्लोक गाए जाने से विदुर को और आगे प्रश्न पूछने का प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। श्लोक संख्या 3 का तात्पर्य, परम भगवान तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, एक को भागवत मार्ग अथवा श्रीमद् भागवतम का मार्ग और दूसरे को पांचरात्रिका विधि कहते हैं। पांचरात्रिका विधि मंदिर में पूजा करने की विधि है, जबकि श्रीमद् भागवतम की विधि नवधा भक्ति है जो श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक साथ दोनों ही विधियों को अपनाता है, जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति की जा सकती है। जैसा कि विदुर ने यहाँ उल्लेख किया है, सर्वप्रथम नारद मुनि ने यह पांचरात्रिका विधि चलाई। So, Narada Muni he is the best of the devotees of Lord Krishna. And not only is he the best of the devotees of Lord Krishna, he is also the best of the sons of Lord Brahma. तो जो नारद मुनि हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जितने भी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं और न केवल सब भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं परंतु ब्रह्मा जी के सब पुत्रों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। Lord Brahma mentions that Narada is his best of sons. In fact, he told Narada himself, when Narada had inquired about how Indra gained victory through the Shringakavacha, and Lord Brahma was trying to explain to Narada, he recited this in Shringakavacha. So in one of those early verses, Lord Brahma mentions in response to Narada's inquiry about the glories of the Shringakavacha. Lord Brahma said, you are the best of myself. Sunanada Vakshami, Putra sisters Tapodana. My dear Narada, listen to me. You are the best of my sons. Putra sisters. तो ब्रह्मा जी स्वयं नारद मुनि को बताते हैं कि आप मेरे सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं। जब नारद जी ने पूछा था इंद्रदेव के बारे में कि किस तरह नरसिंह कवच का पाठ किया और विजय प्राप्त की, तो नरसिंह कवच की स्तुति करते हुए और उसका गुणगान करते हुए ब्रह्मा जी स्वयं नारद जी को बोलते हैं कि मेरे सब पुत्रों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। So, Narada is all the way around. He's very dear to his father. He's very dear to Lord Krishna. तो नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। And why? What is his secret? और क्या रहस्य है, क्यों नारद मुनि भगवान को इतने प्रिय हैं? According to Lord Brahma, Narada is his best of sons because of Tapodana, the wealth of austerity. And what is that austerity? Traveling around the whole 3 worlds, distributing the glories of Lord Krishna. तो ब्रह्मा जी के अनुसार नारद मुनि उनके सर्वश्रेष्ठ पुत्र इसलिए हैं क्योंकि वो सब जगह भ्रमण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं हर जगह पर जाकर। So Narada has also written literature on how to attend to the deities of Lord Krishna. It's called Pancharatrika Vedi. That process is a part of Pancharatrika Vedi. And so Narada is an authority, but not just an authority, not just an acharya in the disciplic succession. He has a personal relationship with his father. He has a personal relationship with Krishna. You see, that is the difference. When you are a great man, a big man, or a big woman in a position, official position, that's one thing. And whether your family members, say your father, your mother, is lovingly disposed to you, that can say, oh, this is the best of my sons, or this is the best of my daughters. It entails a lot of things. तो नारद मुनि सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि वो तपस्या करते हैं और एक तो तपस्या में बहुत आगे हैं इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान को प्रिय हैं, ब्रह्मा जी को प्रिय हैं, और ना केवल ये, उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ सीधा संबंध है। तो कई बार हो सकता है कि वैसे तो ठीक हो सब, परंतु जब परिवार के अंदर मतलब कार्य वगैरह सब सही करते हों
परंतु परिवार के अंदर जब संबंध होते हैं एक दूसरे के साथ तो फिर वो सर्वश्रेष्ठ होता है. So, in the Narada Pancharataka, details is provided how to attend to deities. तो नारद मुनि ने भगवान की अर्चना कैसे की जाए इसके ऊपर नारद पंचरात्रिका विधि लिखी है और उसमें काफ़ी विस्तार में बताया है कि कैसे भगवान की सेवा की जाए. So not only is he traveling around the whole place, but he's also a big scholar, writing literature on how to serve Krishna in the form of his deity. तो न केवल नारद मुनि एक ऐसे प्रचारक हैं जो भ्रमण करते हैं, परंतु साथ के साथ बहुत बड़े पंडित हैं, स्कॉलर हैं, और उन्होंने रचना की ये नारद पंचरात्रिका विधि की, जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के अर्चा वगैरह की सेवा कैसे की जाए. And serving the deity requires a lot of ideal values, and therefore, in most temples, they don't allow you to serve the deities except you're a Brahmin. तो जो श्री विग्रह हैं उनकी सेवा करने के लिए बहुत योग्यता की आवश्यकता होती है, इसलिए सर्वप्रथम ब्राह्मण हैं उन्हीं को अधिकार मिलता है विग्रह की सेवा करने का. Because dealing with the deities means dealing directly with the Supreme Personality of Godhead. क्योंकि अर्चा विग्रह के साथ या अर्चा विग्रह की सेवा करना मतलब साक्षात भगवान की सेवा करना. And the Lord is Pavitra, is all pure. So the devotee who has to attend to him must also be pure. Why not? और भगवान पवित्र हैं, भगवान पूर्ण शुद्ध हैं, तो इसलिए जो भक्त भगवान की सेवा करता है उसको भी शुद्ध होना होगा. So pujaris, they have a wonderful opportunity to directly serve the Lord. This is the procedure. They have to follow the procedure that is laid down by Narada Muni in the Pancharataka. तो पुजारियों के पास बहुत सुनहरा अवसर है कि साक्षात भगवान की सीधा सेवा कर सकते हैं. उसके लिए एक प्रणाली है जो कि नारद पंचरात्रिका विधि में दी गई है. And so Prabhupada mentions in the purport that in ISKCON, in our society, we do both. We follow Narada's Pancharatika Vidi, and we also follow the 9 processes of devotional service as enunciated by the Acharyas, Prahlad, whatever. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि हम ISKCON संस्था में दोनों प्रणालियों की शरण लेते हैं, नारद पंचरात्रिका विधि की भी और भागवत विधि की भी. So, the ball is in our court. We have been provided. If you go to the law court, you say something, you have to convince the judge or the magistrate by making a reference to the law book. The Pancharatika Vedi is the law book of how to worship the deity of Lord Krishna. तो गेंद हमारे पाले में है. जब भी कोई केस होता है तो जज को बताया जाता है और लॉ बुक के अनुसार कि यहाँ पर ऐसा लिखा है उसके अनुसार निर्णय किया जाता है. तो इसी तरह नारद पंचरात्रिका विधि में सारे विधि विधान है कि कैसे अर्चा विग्रह की सेवा की जाए. It is pertinent to indicate that Prabhupada purposely mentions we do both simultaneously. Why? Because the tendency is that we think, well, this is the 9 processes of devotional service. That's what I have to follow. The Pancharatika Vidi. Well, you know, we are Lord Chaitanya's associates. We are followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We're going to the streets and distribute the holy name. This is what Lord Chaitanya, this is what Lord Chaitanya inaugurated, It didn't inaugurate, deity worship. Therefore, Prabhupada purposely mentions, indicated, we do both. Simultaneously means the two go together. तो प्रभुपाद जी ने जानबूझकर अपने तात्पर्य में ये बात लिखी है कि हम हरे कृष्ण आंदोलन में दोनों विधियों को साथ साथ देते हैं. क्योंकि कोई हम कह भी सकते हैं कि हम तो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, हम तो बाहर जाते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो हमें क्या विधि विधानों में फंसना, क्या पंचरात्रिका विधि करना इत्यादि. इसलिए प्रभुपाद जानबूझकर तात्पर्य में कहते हैं कि हम दोनों को साथ साथ करते हैं. The 9 processes of bhakti begin with hearing and chanting. But not everyone is going to be interested
from our experiences, not everyone is interested in chanting. The people we meet, we cultivate, the people come to the temple, not everyone is interested in chanting. Yeah. तो नवदा भक्ति का आरंभ होता है श्रवण कीर्तन से, और हम देख सकते हैं और अपना अनुभव भी हम सब देख सकते हैं कि हर कोई जो मंदिर में आता है उसकी श्रवण कीर्तन में रुचि नहीं होगी, कीर्तन में रुचि नहीं होगी, हरिनाम में रुचि नहीं होगी. So you might be preaching to somebody out there, or distributing books and talking to somebody, and they don't seem to, they give different excuses, why they wouldn't chant or why they wouldn't read the books. But sometimes it so happens that when the devotee creates a connection with this type of people and invites them to come to the temple, when they see the deity, they melt, their heart melts, and they have a whole lot of transformation. तो कई बार हम प्रचार करते हुए देखते भी हैं कि हम जाते हैं, किसी को बोलते हैं हरिनाम करो, किसी को बोलते हैं पुस्तक लो, वो बोलेगा क्यों हरिनाम करूं, मैं क्यों करूं इस तरह, उसकी कोई रुचि नहीं है. और फिर अगर भक्त उससे कुछ संबंध बनाता है, उसको मंदिर में निमंत्रण देता है, तो व्यक्ति मंदिर में आता है और यहाँ पर लाकर भगवान के दर्शन करता है, भगवान के शिव विग्रह के दर्शन करता है, तो उसका हृदय पिघल जाता है और फिर वो भक्ति प्रणाली को स्वीकार करता है. Some people become ardent followers of the Hare Krishna movement because of how they become attracted to the gorgeous nature of the dressing of the deities. तो कई लोग तो इसलिए भक्त बन जाते हैं कि मंदिर में आते हैं और देखते हैं कि भगवान का इतना सुंदर तरीके से श्रृंगार किया जा रहा है, उनके वस्त्र इतने अद्भुत हैं, बस उसको देख के वो भक्ति में आ जाते हैं. They make the deity the object of meditation, and Krishna purifies them from within and from without. And very quickly they become involved in the other processes such as chanting and hearing about the glories of the Lord. तो श्री विग्रह परम शुद्ध और परम सुंदर है, तो जब लोग आते हैं और उनका दर्शन करते हैं तो उनका हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, और जब हृदय का शुद्धिकरण होता है तो बाकी जो प्रणालियाँ हैं श्रवण कीर्तन इत्यादि उनकी भी शरण लेते हैं, वो उनका भी अभ्यास करना आरंभ कर देते हैं. Another tendency is for someone to think, I'm a pujari, I'm very busy. And I've seen this when I was younger, brahmachari in the temple, especially when I was a brahmachari in New Jersey. So we have these two boys who came from Mayapur. They are Nepalese boys. One of them went to the Gurukul, very sharp, intelligent, very, very pinpointed in his preaching. And but I'm close to all of these boys, the pujaris, because I was also doing pujari service along with my college preaching. So I remember one Janmashtami, they were so busy, these two boys. So the next day, I asked one of them, who was close to me. I said, such and such, did you chant 16 rounds yesterday? He said, Vasudeva, what is this? You saw me, I was very busy. Yes. और इसका दूसरा पक्ष भी है. तो महाराज कह रहे हैं, मैंने खासतौर पे अपने ब्रह्मचारी दिनों में देखा है, और खासतौर न्यू जर्सी में जब मैं ब्रह्मचारी था तो वहाँ पर दो युवा भक्त थे, वो मायापुर से आए, नेपाली थे वो. उनमें से एक तो बहुत अद्भुत था, उसमें बहुत अधिक गुण थे, बहुत अधिक स्किल्स थे और बहुत व्यस्त रहते थे. तो एक बार जन्माष्टमी का दिन था और उतना बहुत व्यस्त थे. तो अगले दिन मैंने पूछा उनमें से एक से, जिससे मेरा संबंध ज़्यादा अच्छा था, मैंने पूछा कि कल आपने माला की? तो वो कहता है कि अरे क्या बात कर रहे हो, देखा नहीं तुम्हें कल मैं कितना व्यस्त था. So, and this happens a lot in our temples, especially if the devotees, those who are working so hard, they are not monitored properly with love and with love and affection. They could get so absorbed in their service and minimize their chanting. और कई बार हम अपने मंदिरों में देखते हैं कि कुछ भक्त, विशेषता ऐसे भक्त जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं अपनी सेवाओं में, तो अगर उनका प्रेम के साथ, स्नेह के साथ उनका ऊपर उनका ध्यान नहीं रखा जाए
तो फिर वो भक्त खो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी हरिनाम इत्यादि को श्रवण कीर्तन को वास्तव में नहीं कर पाएंगे, केवल सेवा में व्यस्त रहेंगे। But Prabhupada said we should do both together. We should do the deity worship and follow the hearing and chanting too. परंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें दोनों साथ साथ करने चाहिए, हमें श्री विग्रह की सेवा भी करनी चाहिए और साथ के साथ श्रवण और कीर्तन भी करना चाहिए। Oh, another way to try to dodge chanting mala is say I'm a Kirtaniya. और एक इसका दूसरा पक्ष है कि कोई बोलेगा कि मैं तो कीर्तनिया हूँ। I remember one time I gave a class at Washington DC temple. So I don't remember exactly what I was talking about. But during the question and answers, there was this boy, he's a Kirtaniya. So he said that, he's a Kirtaniya, so he doesn't need to chant japa. तो महाराज बताने एक बार मैं कक्षा दे रहा था और कक्षा मुझे याद नहीं कहाँ पर थी, पर जो भी है क्या विषय था याद नहीं, पर जब कक्षा समाप्त हुई और प्रश्नोत्तर हुए तो एक भक्त ने पूछा कि मैं तो कीर्तनिया हूँ, तो मुझे जप करने की क्या आवश्यकता है। So my point was, Bhakti Vinod was the best of the Kirtaniyas. He was not only a Kirtaniya, he composed lyrics, composed songs, which in most cases we are using now. But he never neglected the chanting. He was the best of chanters. Although he had a big family of more than 10 children, but he never neglected his chanting. So how busy are we, or how devoted are we in Kirtan, that we will say, the Kirtan we are doing compensates the japa. तो कई बार कीर्तनीय लोग बोलते हैं कि मैं तो कीर्तनिया हूँ, तो मुझे जप करने की क्या आवश्यकता है। तो हम समझ सकते हैं इसके बारे में कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर उनसे अच्छा, उनसे श्रेष्ठ कीर्तनिया कौन हो सकता है। इतना सुंदर कीर्तन करते थे, ना केवल कीर्तन करते थे, रचनाएं की, इतने सारे वैष्णव भजन लिखे, आज भी हम वो सब वैष्णव भजन गाते हैं। परंतु श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इतने सुंदर कीर्तन करने के बावजूद, इतने वैष्णव भजन लिखने के बावजूद, एक गृहस्थ होने के बावजूद, 10 बच्चे थे, बड़ा परिवार था, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी कभी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने निजी जप को थोड़ा छोड़ दिया हो या हल्का कर दिया हो या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया हो। वो तो जप पूर्ण रूप से करते हैं। तो क्या हम उनसे अधिक बड़े कीर्तनिया हैं या उनसे अधिक भक्तिभाव से कीर्तन करते हैं या फिर उनसे अधिक व्यस्त हैं कि अपना जप ना करें। So the point here in this purport, Prabhupada says, we have to do everything. We have to do the chanting and hearing. We have to do the deity worship. So there are no excuses. In fact, when you have to take initiation, your guru doesn't ask you how many. Being a Kirtaniya is not one of the vows. One of the vows is to chant 16 rounds. And devotees who are aspiring to take initiation must practice how to sustain their japa, minimum rounds of 16 rounds every day without any lapses based on some existential excuses. तो जब आप गुरु दीक्षा देते हैं तो दीक्षा के टाइम में जब प्रतिज्ञा लेते हैं हम लोग या गुरु हमसे वचन लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं बोलते कि कितना कीर्तन करोगे, उसमें ये होता है कि कितनी माला करोगे, कम से कम 16 माला करेंगे। तो इसलिए जब वचन दिया है तो हमें ये हर दिनचर्या में हर रोज़ कम से कम 16 माला करनी है। So yes, we do. I will do our deity service. I remember also that in most temples, they give Brahmin initiation. The priority is given to those who want to be involved in deity service. और हमने ये भी देखा कि कई सारे मंदिरों में ब्राह्मण दीक्षा उनको दी जाती है जो कि श्री विग्रह की सेवा में वास्तव में जुड़ना चाहते हैं। So, being a Brahmin means you're making advancement, and Krishna wants devotees who are
purified to worship him. तो ब्राह्मण का मतलब है कि और कृष्ण चाहते हैं कि उनके सेवा वो करे, उनके विग्रह की सेवा वो करे जो कि वास्तव में शुद्ध हुआ है. तो ब्राह्मण का मतलब है शुद्धिकरण करना. So in most temples, when you take Brahmin Diksha, you get some service in the deity department. तो अधिकांश मंदिरों में जब ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं तो फिर सेवा का अवसर मिलता है, शिव विग्रह की सेवा का. So it is important for us to align with the instructions of Srila Prabhupada. तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं उनके साथ हम एक ही दिशा में रहें. The Prachetas, we are very much involved in trying to satisfy or trying to fulfill the instructions of their father. And fortunately for them, Nada came and requested them to rather do something else that would enable them to have emancipation from the clutches of repeated birth and death at the end of this life. तो प्रचेतास बहुत निष्ठावान थे और अपने पिता की प्रसन्नता के लिए तपस्याएं कर रहे थे. उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नारद मुनि वहाँ पर आए और नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी कि ये कर रहे हो, इससे अच्छा कुछ ऐसा करो कि आप जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सको. So Nara took some type of risk, because when you go to intervene, interfere in a parent's instruction to their child, you're really looking for trouble, right? But Nara would do that anyway. He tells them, leave this. This is what you should do. तो एक तरह से नारद मुनि ने बहुत बड़ा खतरा लिया, क्योंकि यदि माता पिता ने कुछ आज्ञा दी है या कुछ कार्य करने के लिए बोला है अपने बच्चों को और कोई जाकर उनको बोलता है कि नहीं ये सब छोड़ दो, उसकी जगह ये करो, तो बहुत बड़े खतरे की बात है. आप अपनी समस्या बुला रहे हो वास्तव में. You know, that is a type of risky preaching, and Nara did get some repercussions for that. तो यही प्रचार में खतरा है और यही कृष्ण के लिए सेवा है. So we are also trying to, enliven people. There's some people who come around, they don't seem to be interested. I remember the other day I went for some home program, and I was just very tactful in the way I presented the whole thing, because a lady said, what should you force people to leave onion and garlic? I said, we don't force people to leave onion and garlic. तो इस तरह प्रचार में खतरा होता है. तो मेरे को याद है मैं एक भी होम प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ पर मुझे बहुत ध्यानपूर्वक बातों को रखना पड़ा, क्योंकि एक महिला ने पूछा वहाँ पर कि आप लोगों को ज़बरदस्ती प्याज लहसुन क्यों छुड़वाते हो. तो मैंने बोला कि हम तो ज़बरदस्ती नहीं छुड़वाते प्याज लहसुन. So in process of preaching, we should not anger people, we should be tactful. तो प्रचार जब करते हैं तो हमें लोगों को क्रोधित नहीं करना, परंतु एक इस तरीके से करना है कि उन तक वो मैसेज पहुंच पाए. I've seen a lot in our movement how some people try to preach like Prabhupada. Chastise people, a Papa would chastise even scientists, okay? But he would make them devotees. Why? Because he chastised them with love. The energy that was radiating from his chastisement was very soothing, and those people resonate with his argument, with his proposition, and become devotees. तो हम प्रभुपाद की नकल नहीं कर सकते कि प्रचार में जाएं और लोगों को डांटना शुरू कर दें. तो प्रभुपाद जी तो बहुत जोर की डांटते थे वैज्ञानिकों को, पर जब प्रभुपाद जी डांटते भी थे तो वो वास्तव में उनकी जो डांट है वो प्रेम से भरी हुई थी. इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, भारी रूप से कठोर था, परंतु क्योंकि उसमें प्रेम भरा हुआ था तो वो जाता था और वैज्ञानिक के हृदय में छू जाता था और वैज्ञानिक भक्त बन जाता था. So bottom line is trying to preach to people to bring them to Krishna consciousness. It's like a warfare. You're trying to drag somebody away from what they are attached to.
तो जो प्रचार है वो एक तरह से युद्ध है, क्योंकि प्रचार का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति को जिस चीज़ में उसकी आसक्ति है उससे दूर लेकर आ रहे हैं. But we are not proper, so we can't just hammer and chastise people. तो हम प्रभुपाद नहीं है, तो ऐसा नहीं कि हम उनके जाके दिमाग में हथौड़ा मार देंगे या डांट डपट के उनको भक्त बना देंगे. We see how we build relationships, and when the people come close to us, they could become transformed. तो हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है प्रचारक के रूप में संबंध बनाना लोगों के साथ, और जब संबंध बनते हैं वो हमारे पास आते हैं तो फिर हम उनको बताते हैं और उनका शुद्धिकरण होता है. So our books, instructions of Srila Prabhupada, they are very much valuable for anyone and everyone to delve deeper into these literatures, to acquaint themselves with the process of the 9 processes of devotional service and with the process of deity worship. तो हमारे जो ग्रंथ हैं वो प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, वो हर किसी के लिए उपलब्ध हैं और उनको पढ़कर लोग भक्ति भाव में जुड़ सकते हैं. और जो हमारी प्रणाली है उसमें दोनों हैं, भागवत विधि भी है और पंचातिका भी है. So we should follow the footsteps of Narada Muni. We should be preachers. Devotional life, our movement is a movement of preachers. We don't just build big temples and then we become members of that organization or members of that community and we are satisfied with that. We want to help to bring other people, other lost souls to the lotus feet of तो हमारा of the Lord. तो हमारा आंदोलन है, प्रचार का आंदोलन है. ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर मंदिर बनाते हैं, विशाल मंदिर बनाया और बस उसमें बैठ गए, उसमें एक सोसाइटी बना ली और वहीं पर बस कुछ करते रहते हैं. नहीं, हम प्रयास करते हैं कि बाहर जाते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं और लोगों को भगवान की शरण में लाते हैं. So here, in the Prabhupada mentioned something which is very striking. The Krishna conscious movement accepts both processes simultaneously and thus enables one to make steady progress on the path of realization of the Supreme Personality of God. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक साथ दोनों ही विधियों को अपनाता है जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार के मार्ग में निरंतर प्रगति की जा सकती है. In other words, whatever services we are doing, we have to incorporate the chanting and hearing of the glories of the Lord. The chanting and hearing of the glories of the Supreme Personality of God. तो कहने का मतलब हम जो भी सेवा कर रहे हों उसके साथ साथ हमें श्रवण और कीर्तन भगवान के गुणों का करना है. And self-regulation is very imperative for making progress in Krishna consciousness. If we are self-regulated, we'll be able to go to bed on time. We'll be able to get up on time and attend to our sadhana before the sunrise. और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आत्म संयम बहुत अधिक आवश्यक है. यदि हम आत्म संयमित होंगे तो हम रात को सही समय पर सोने जाएंगे और फिर हम प्रातःकाल जल्दी उठ पाएंगे और सूर्योदय से पहले अपनी साधना कर पाएंगे. Okay, we like to adjourn this meeting now. Any comments or questions? तो आपका धन्यवाद. यहाँ सेवा हम ये समाप्त करेंगे कथा. तो कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा, समीक्षा? Thank you, Maharaj. Thank you very much for highlighting the point that Prabhupada purposely indicated that we should do both the things simultaneously. And you very elaborate, very nicely emphasized the taking darshan of the deities also. Maharaj, I have a question from the past class. Can I have that question? Maharaj, you said in your class that all the children born, all the children coming to Krishna consciousness will not be Paramhansas, may be Paramhansas. So we should give them the material education as well as the spiritual education. But Maharaj, what I feel is that sanskaras are too very strong. Sanskars are too very strong that is not impossible but almost impossible to win the sanskars. And that is why that bhakti become very difficult. So when we give them the chance to go to the colleges and to get the education, so they will be intermingled with the outer world. And they may get some attraction to that also. So are we saving them, or it's giving them the chance that it's become difficult for them to return back? Okay. This is a nice point.
This is part of the philosophy we propagate. I know one guy, one boy, his parents were proper disciples. Parents, proper disciples. He was serving one guru, his Guru Maharaj, in India for years. Brahmachari. Now, at some point in time, he never went to school. Zero. This type of philosophy. So, at some point in time, he wanted a wife. So he went back to America. Wife means householder, holding a house. If there are no skills, how are you going to hold a house? If there are no skills, how are you going to fend for yourself and your family? Okay, just depend on Krishna, you know. Have faith in Krishna. If you have deep faith in Krishna, you don't need to do anything. What's the name of this snake? Who just lie down there and then his food come naturally. He eats. What's the name? A python, yeah. So, you see, to have faith in Krishna is one thing, and not to strategically plan our lives. Plan, even in our services, we need planning. Prabhupada said, we have to make our plans and hang on Krishna like a garland. Let Krishna give the final verdict. We don't sit back and say, I do nothing. Krishna, you do everything. Arjuna did not do that. Krishna was the charioteer of Arjuna. But Arjuna was the archer. He was ordering Krishna, take me there, take me here, take me here. But he did the job. He had skills. Even Arjuna had skills. If you have a child and the child is skillless, what is her future? What is his future? I'll tell you a story. I was in Gitanagri. One of my friends, his family, Indian guy, his family, all of his brothers are medical doctors. I think about there are 5 children in that family. Only him read IT. So, he had a wife. He had a baby. He came to Gitanagri, a baby girl. He came to Gitanagri. And incidentally, I was in Gitanagri that time. So he came to meet me with his wife. And then, because we are friends, I know his father. His father just passed away. Father has a PhD in some science field. But all of his brothers are medical doctors. And to be a medical doctors in America is like a demigod. Because they are the most highly paid workers. So when he came to meet me, what did he come to tell me? He said, it came to share with me his plan about his newly born daughter. And what was the plan? They planned on making the girl a cowhead girl in America. In America. In America. The story is getting long. Maybe you can interpret some part. Translate some part. Yeah. तो प्रश्न ये था धनप्रभु का कि महाराज आपकी पिछली कक्षा में था कि बच्चों को हमें भौतिक शिक्षा भी देनी चाहिए, पर प्रश्न ये है कि वैसे ही बहुत संस्कार भारी होते हैं, ऊपर से बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजेंगे तो वहाँ पर वो अलग अलग लोगों से भौतिकवादियों से मिलते हैं तो और कठिन हो जाएगा। तो महाराज कह रहे हैं कि उनको याद है एक ऐसी इंसिडेंट जिसमें माता पिता हैं बच्चों को बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी, कुछ पढ़ाया ही नहीं, और जब लड़का बड़ा हुआ, ब्रह्मचारी था वो और भारत में रहता था, गुरु से दीक्षा प्राप्त था, सेवाएं करता था, पर जीवन में एक समय आया जब उसको था कि मुझे गृहस्थ आश्रम में जाना है, तो हाउस होल्डर बनना है,
परंतु उसके पास कुछ शिक्षा नहीं थी, कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कोई स्किल्स नहीं थे, तो कैसे वो परिवार को चला पाएगा। तो इसी तरह गीता नगरी में एक बहुत अच्छा परिवार है, महाराज को मिले, महाराज के मित्र हैं, उनके पुत्र पुत्री हैं, वो आए, शादीशुदा हैं, खुद डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं, भक्त हैं। और उनकी छोटी बेटी हुई, तो जब बेटी हुई तो महाराज को बताया कि महाराज हमारी योजना है कि हम अपनी बेटी को हम एक ग्वालिन बनाएंगे, तो अमेरिका में ग्वालिन बनाएंगे। हाँ, ऐसे महाराज बोल रहे हैं कि उनकी योजना थी कि अमेरिका में उसको ग्वालिन बनाएंगे और कुछ शिक्षा नहीं देंगे। So I looked at him and said, this is a good plan. You're doing well. You and your wife, you're doing well in your thinking. तो मैंने उन लोगों को देखा और बोला कि तुम्हारी बहुत अच्छी योजना है, तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो। I said, so you have a degree. You're an IT guy. You're making plenty of money. Your wife is also a big time, a skillful personality. I think the wife also had works with an IT company. So I said, the both of you, you're well skilled, and this little girl, you say she should be deprived of any skills. What is her future in America? तो महाराज बोलते हैं, मैंने उनको बोला कि देखो तुम तो आईटी फील्ड में बहुत आगे गए हो, बहुत धन कमाते हो, तुम्हारी पत्नी है वो भी बहुत पढ़ी लिखी है, वो भी आईटी फील्ड में काम करती है, दोनों ने इतनी अधिक शिक्षा प्राप्त की है, और अपनी बेटी को तुम यहाँ पे अमेरिका में ग्वालिन बनाओगे, तो उसका क्या भविष्य है। So I made a reference to his father, his own father, who has a PhD, big guy. The father had a big house where the whole of the children with their wives and children, they live in the same house. Really huge house. For you to have that huge house in America means money. तो मैंने उस भक्त को बोला, उसके पिता के बारे में याद दिलाया कि उसके पिता तो बहुत बड़े PhD थे, वो बहुत बड़ा घर था, सारा परिवार उसमें रहा करता था, और अमेरिका में इतना बड़ा घर मतलब काफ़ी पैसा रहा होगा उनके पास। So I told him, it's not the best plan you're making for this girl. तो मैंने उसको बोला कि तुम अपनी बच्ची के लिए योजना बना रहे हो वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। So sometimes we hear some things, or we listen to some people give lectures, and then we want to implement that, but we do not implement it in our own lives. We want to use our own child as a tool for the implementation. This is not being realistic. तो कई बार हम प्रवचन सुनते हैं या कुछ सुनते हैं भक्तों से और हम उससे प्रेरित हो जाते हैं, पर प्रेरणा लेते हैं जो सुना है उसको अपने बच्चे के जीवन में लागू करने के लिए, अपने ऊपर लागू नहीं करते, बच्चे के ऊपर लागू करना चाहते हैं, तो ये तो सही नहीं है। So this boy, back to the other point, this boy who was serving his guru for the whole of his life in India, and at some point in time he wanted a wife. He's skillless. He went to America and he has to start from the ground, from the beginning, at least to get some skills. Otherwise, how is the marriage going to take place? Where is the means to feed the wife? तो ये जो ब्रह्मचारी था जो भारत में रहता था, पूरा जीवन गुरु की सेवा कर रहा था, और जब ऐसा समय आया कि वो विवाह करना चाहता था, उसके पास कुछ शिक्षा नहीं थी, कोई स्किल्स नहीं थे, योग्यता नहीं थी, तो अमेरिका वापस गया और अमेरिका में उसने शुरुआत की, मतलब बिल्कुल नीचे के लेवल से उसने शुरू किया, वरना कैसे परिवार को चला पाएगा। So it is not the best process. तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ नहीं है बच्चों को शिक्षा ना देना। I tell you one thing, just recently in India here, in the Delhi area, there was a boy, he was in college. The boy was in college. And he was attracted to devotional service. So he was under the care of a counselor. And then the counselor, when Prabhupada was preaching, he goes to universities and colleges too. And some of the boys he met, he recruited them from the universities. Some, he stopped them from furthering their college program. Some wanted to stop going to college, and Prabhupada says, okay, typical case is Hridaya Ananda.
He wanted to stop. He said, I just want to follow you, Prabhupada. And Prabhupada said, no, finish your studies. We need your skills in the future. तो जब अभी की घटना है, दिल्ली में एक कोई भक्त था, कॉलेज में आता था और उसके काउंसलर से कुछ बात हुई. तो जो भी है, प्रभुपाद जब प्रचार करते थे तो अगर कोई कॉलेज में है तो हृदयानंद महाराज हैं, वो सब कुछ छोड़ के आना चाहते थे, पढ़ाई छोड़ के आना चाहते थे. प्रभुपाद ने कहा नहीं, आप पढ़ाई करो, क्योंकि जो आप शिक्षा लोगे वो आपकी सेवा में काम आएगी आगे. So there was this boy in the Delhi area. I don't want to be specific on the temple, but this happened just recently. So the counselor, the boy was in college. The counselor coerced him to leave his studies to come and live in the temple as a brahmachari. So when it was time for initiation, the boy's Guru Maharaj asked that, what's the status of your studies? When are you going to graduate? He said, Maharaj, I stopped the studies. Maharaj said, why? Your Guru Maharaj. He asked, why? He said, my counselor said I should stop. तो एक युवक है, तो उसने पढ़ाई छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि काउंसलर ने बोला था. और जब दीक्षा की बात आई तो दीक्षा के समय महाराज से मिलने गया और महाराज ने पूछा कि तुम्हारी शिक्षा क्या है, क्या कर रहे हो. तो उसने बोला, महाराज मैंने तो छोड़ दिया कॉलेज. तो महाराज ने बोला क्यों? तो वो कहता है क्योंकि मेरे काउंसलर ने बोला. तो महाराज ने उसको स्वीकृति नहीं दी. So I think that we are having a negative approach to sustainable Krishna consciousness. And some of the gurus are really helping to see how this could be rectified. Let me tell you a story. In east of Kailash temple, I gave a class, Bhagavatam class one day. After the class, one lady came to meet me. She came with one of my friends. So she came and started saying, oh Maharaj, thank you. I said, I don't know you. What did I do that you're thanking me for? Yes. तो महाराज कहें कि एक बार मेरी ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में क्लास थी, और जब क्लास संपन्न हुई तो एक माता जी मेरे पास आई, मेरे किसी मित्र के साथ आई, एक महिला, और कहती है धन्यवाद. तो मैंने बोला कि मैं तो आपको जानता नहीं, तो आप मुझे धन्यवाद क्यों कर रही हैं? मैंने तो क्या किया आपके लिए? So she explained to me that her Guru Maharaj, his Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj, instructed her to go and do a PhD. Are you hearing? Go and do PhD. To go and do a PhD. तो उन्होंने बोला कि जो मेरे गुरु महाराज हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि जाओ और PhD करो. So she's been on that program, but the preaching that she's been hearing around has been completely against what she was doing. तो इस तरह वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रही थी, परंतु आसपास के भक्त हैं वो कह रहे थे कि ये बिल्कुल सही नहीं कर रही हो. Bhakti, you don't need PhD. Just chant Hare Krishna and be happy. So she said she was almost dropping out from the program because of the antagonism. So I asked her, so between the people around your community and your guru's instruction, which one is more important? तो उन्होंने बोला कि मैं तो PhD छोड़ने ही वाली थी, क्योंकि आसपास के भक्त कह रहे थे भक्ति कर रही हो, भक्ति में PhD क्या आवश्यकता है, तो फिर इसलिए मैं छोड़ने वाली थी. तो महाराज कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आसपास के भक्त क्या बोल रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है, या तुम्हारे गुरु ने क्या आज्ञा दी है वो महत्वपूर्ण है? This one is not 100 years ago, just recently. तो ये कोई 100 साल पुरानी बात नहीं है, अभी आधुनिक बात है, समय की बात है. So I told her, go ahead, follow your guru's instruction. There's a reason for giving you that instruction. And the secret of success in devotional life is to satisfy, to please your guru, to follow your guru's instruction. तो मैंने उनको बोला कि जाओ और अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करो. भक्ति में सफलता का रहस्य है गुरु की आदेश का पालन करना. She has finished. और अब उन्होंने PhD कर लिया है. She's a doctor in education, PhD in education. She's married to one of your godbrothers. And she and her husband, they serve at Dwaka Temple. They have 2 beautiful girls. So this type of unfounded preaching, unfounded propaganda
is going on in our movement. That even a Prabhupada disciple didn't prepare his children for their future. So the boy was a brahmachari for years in India. At some point in time, he said he wants to marry. He has to go back to America to start from the grassroots to get some skills before he gets married. And here, someone says, my child, I want to make my child, my daughter, a gopi. A cowhead girl. Cowhead girl means no, he's not going to send the girl to anywhere for skills development. But read history, read the background of those cowhead girls. Read the background about those cowhead girls. And you realize that they are not just some village girls. They are high, profound intellectuals, sages who wanted to partake in Ram's Leela. And Ram said, when I come in my incarnation as Krishna, you join me. If you read books like Govinda Lilamrita or even Mukta Charita, you see what those gopis are. In fact, we read Mukta Charita in some of the chapters, you can't even understand what those gopis are saying. You say they don't have education? Woo. Good for you. तो अभी हमारे आंदोलन में ऐसा चल रहा है प्रोपेगेंडा की, कई बार हम सोचते हैं कि किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाओ। परंतु इस बात को समझे, जैसे वो माता पिता अपनी छोटी सी बेटी को ग्वालिन बना रहे थे, तो क्या सोचते हैं ग्वालिन क्या एक गांव में रहने वाली लड़की है, वो ग्वालिन है? नहीं, ये जो गोपियाँ थीं तो बहुत प्रगाढ़, बहुत पंडित थे, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे और इन्होंने भगवान रामचंद्र की पर्सनल एसोसिएशन करना चाहे तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, कृष्ण लीला में तुम मेरे साथ आना। तो आप पढ़ेंगे, गोविंद लीलामृत पढ़ेंगे और मुक्त चरित्र इत्यादि ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। गोपियाँ ऐसी जो बातें बोल रही हैं आपको समझ ही नहीं आएंगी, आपके ऊपर से निकल जाएंगी। मतलब गोपियाँ कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनपढ़ गवार थी, वो बहुत प्रगाढ़ पंडित थे। So we should be practical. तो हमें व्यवहारिक होना चाहिए। We should not just torture our children using Krishna consciousness as a smoke screen. तो हमें कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावना को एक उसकी आड़ लेकर अपने बच्चों के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। I was in Florida one year in Gainesville, and in Alachua, they have a big community in Alachua. So there was Ratha Yatra, so they took me for the Ratha Yatra. After the Ratha Yatra, one devotee, proper disciple, volunteered to drive me back to the temple. तो मैं फ्लोरिडा में था, अलाचुआ में बहुत बड़ी रथ यात्रा थी और एक भक्त हैं श्रील प्रभुपाद के शिष्य, उन्होंने कहा कि मैं महाराज आपको लेकर चलूँगा, वो गाड़ी चलाकर लेके गए मुझे। I didn't ask for anything. I did not ask him anything. He started telling me about his life. तो मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने अपने जीवन के बारे में मुझे बताना आरंभ किया। He was in medical school when Papa disciples who were preaching in his country met him in their college. And they preached to him, they urged him to stop his studies and come be a brahmachari. तो उन भक्त ने बताया कि वो मेडिकल स्टूडेंट थे और प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ पर जब प्रचार कर रहे थे तो वो आए और उनको बोला कि आप पढ़ाई छोड़ दो, कॉलेज छोड़ दो। So he subscribed to the idea. तो उन्होंने उनकी बात मान ली। Backed out from the medical school, but it brought a big trouble in their family. तो वो मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई लिखा के छोड़ दी और परिवार में बहुत समस्या हो गई। Became a brahmachari. और वो ब्रह्मचारी बन गए। But after when Prabhupada left the planet, after some years, I decided to marry. और कई सालों के बाद प्रभुपाद जी जब संसार छोड़ के गए,
व्यक्त रूप की सेवा समाप्त हुई प्रभुपाद जी की, तो उस भक्त ने सोचा कि मैं विवाह करूंगा. But he said, look at me, I'm married, but I have no skills. और उसने बोला कि देखिए मैं विवाहित हूं पर मेरे पास कोई भी योग्यता नहीं है. I didn't ask him to tell me anything. मैंने कुछ नहीं बोला था उनसे कुछ बताने के लिए, उन्होंने स्वयं बोला मुझे सब. He volunteered this statement himself. He volunteered this statement. He shared this information himself. तो उन्होंने स्वतः ही मुझे आकर इसे बताया अपने बारे में. One of the things I like about Chopati and Pune temple is that all of those brahmacharis in those temples, there's a minimum skill requirement. There's a minimum skill requirement for you to go and be a brahmachari in those temples. You must have skills. And I've seen some of them who later decided to marry. I saw some of them in America. One of them, he has a big preaching project. He has a big company. He studied IT. He has a big company. He has a big preaching project in one county. तो एक चीज़ जो हमने अच्छी देखी है चौपाटी और पुणे मंदिरों में कि वहाँ पर कोई ब्रह्मचारी बनता है तो उससे पहले उसकी योग्यता देखी जाती है कि उसके पास स्किल्स इत्यादि पूर्ण है नहीं. जैसे एक उदाहरण के लिए एक भक्त है, वो अभी अमेरिका में है, वो IT फील्ड से है और उसकी अपनी एक कंपनी है वहाँ पर. So my point is, in those two temples, that's a standard. And that standard helps to forestall any frustration from any of those brahmacharis. Should they in the future, should any of them in the future decide to marry, they have skills. तो उन दोनों मंदिरों में ये देखा जाता है कि जो ब्रह्मचारी हैं वो ज्वाइन करने से पहले उनके पास पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए ताकि कल को कोई संभावना हो गई कि उनको विवाह करना है तो उनके पास अपना परिवार चलाने के लिए योग्यता होनी चाहिए. So the question of pointing accusing fingers to some preachers will not be there. The question of pointing accusing fingers to some preachers who asked them to come and live in the temple as brahmacharis, and now they're getting married, will not be there because they have skills. They can become still continue with their powerful preaching and take care of their families. तो किसी को दोषारोपण करना से अच्छा है कि अब उन ब्रह्मचारियों के पास स्किल्स हैं, योग्यता हैं जो प्रभुपाद की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं. कभी आवश्यकता पड़ जाए परिवार के लिए तो काम आएगी वो. I remember one year I went to South America and this country, what is the name? Chile. So they had all of this, they had many students that they were cultivating. And my advice to them, following what this Papa disciple shared with me, my advice to those devotees who were cultivating those students was, please encourage all of those students who are coming to you to finish their studies before they come to live in the temple, if they want to come and become brahmacharis. Because of what I have had, even Prabhupada's own disciples have told me about the predicament of not having skills because you may decide to marry in the future. तो मैं एक बार चिली में प्रचार के लिए गया और वहाँ के भक्तों को मैंने ये बोला कि आप जब प्रचार करते हैं और युवकों को ब्रह्मचारी के रूप में लाते हैं तो कृपया इस बात का ध्यान दें कि उनके पास उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्वयं सुना है प्रभुपाद के शिष्य से इसके बारे में. The point is that Krishna is not going to throw the halava, the gulab jamun, and the chapati from Krishna loka down to your household. तो समझने की बात है कि कृष्ण लोक से कृष्ण आपके घर में हलवा, चपाती, गुलाब जामुन नहीं फेंकने वाले. You will have to go to the grocery to buy the grocery. You have to go to the grocery shop to buy the groceries, bring to your house, deliver it to your family, to your wife, to prepare the bhoga to be offered to Krishna. Krishna will not throw the chapatis, the sweet balls, the sweet rice from Krishna Lok. तो कृष्ण लोक से रसगुल्ला, खीर, चपाती दल नहीं फेंकने वाले. आपको
परचून की दुकान पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर खरीदारी करनी पड़ेगी. All right. Yes. One question related to this. There is statement na Jad Vidya Maya Re Vaibhav. What does that mean? Explain. So like material education is what you said, jewelry of Maya. And like preacher also used this statement very much, Jad Vidya. So material education is like if you are more material. And so Prabhupada also given an example that like material education is like a person having material education, but if it is like, yeah, Prabhupada has explained also, like if it is not used in Krishna service, then that person is like a hooded snake that has jewel on his head. Yeah, but look at the people who have good education. I'll give an example of my Guru Maharaj, Srila Bhakti Vasudeva Swami. People became devotees. The people became attracted to ISKCON just by reading an epilogue of his book. Oh, he's from Princeton. They become attracted to Krishna consciousness. Because Princeton is an Ivy League, one of the most prestigious universities in America. तो आपको उदाहरण देता हूँ. मेरे महाराज बोल रहे, मेरे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, तो उनको देखकर कई लोग सिर्फ ये देखकर भक्त बन गए. उनकी पुस्तक का जो शुरू में एपिलॉग या रूपरेखा होती है वो पढ़कर, क्योंकि उसमें या उनके बारे में परिचय दिया है. तो प्रिस्टीन यूनिवर्सिटी से थे वो. प्रिस्टीन यूनिवर्सिटी अमेरिका की सबसे अधिक प्रभावशाली यूनिवर्सिटीज़ में. तो केवल ये देखकर वो ये उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो भक्त बन गए कई लोग, ISKCON से अट्रैक्ट हो गए. In Philadelphia, Prabhupada was in Philadelphia, and some of his godbrothers visited him. At that time, they were accusing Prabhupada instead of appreciating what Prabhupada has done. He spread Krishna consciousness all over the world. Some of them were accusing Prabhupada that, oh, he just made hippie devotees, hippies. तो फिलाडेल्फिया में कई लोग बोल रहे थे कि प्रभुपाद ने बहुत अच्छा प्रचार किया है, और किसी ने बोला, कुछ लोगों ने बोला कि अरे तो केवल हिप्पियों को भक्त बनाया है. So when these Prabhupada's godbrothers visited, one devotee at that time was doing his PhD at Temple University. And so it was in the night. That devotee he has already slept. You know, in the past, we used to have ISKCON Scholars Conference. So they tell us all these stories. So he was sleeping. And Prabhupada sent someone to go and call him. So the devotee went to wake him up. He said, Prabhupada is calling for you in the dead of night. So he was very uncomfortable, but he had Prabhupada is calling for you. So happily he went to meet Prabhupada at his quarters. And when he went, Prabhupada was speaking Hindi with some people. And then he paid obeisances. And then Prabhupada asked him, such and such, what is the title of your PhD thesis? So he told Prabhupada. And Prabhupada said, all right, you can go and sleep. तो एक प्रभुपाद अपने गुरु भाई के साथ बैठे थे, और गुरु भाई लोग इस बात को बोल रहे थे कि केवल हिप्पियों को भक्त बनाया है. तो उस टाइम एक भक्त था जो PhD कर रहा था, प्रभुपाद जी का शिष्य. वो उस टाइम सो रहा था अपने कक्ष में. तो प्रभुपाद जी अपने किसी शिष्य को भेजा कि उसको बुला कर लाओ. उसको बुलाने गए, वो सोया हुआ था. उठाया कि प्रभुपाद बुला रहे हैं. तो थका हुआ था, उठने का मन नहीं था, पर प्रभुपाद बुला रहे हैं तो फटाफट वो आया. और जब आया, प्रभुपाद को प्रणाम किया. प्रणाम करके उठा तो प्रभुपाद जी ने बोला कि PhD में जो आपका PhD का थीसिस का टॉपिक सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? तो उसने नाम बताया. प्रभुपाद जी का ठीक है, धन्यवाद, जाओ सो जाओ. और फिर जाके Idea was that Prabhupada wanted to demonstrate to his godbrothers who visited that, hey, you guys are accusing me that, I made hippie devotees. I have also PhDs. तो समझने की बात यह है कि प्रभुपाद जी अपने गुरु भाइयों को दर्शा रहे थे कि आप लोग कह रहे हैं कि केवल हिप्पियों को भक्त बनाया, देखो मेरे पास ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं, भक्त बने हैं. So the point is that we should not coerce people to leave their studies to come and be brahmacharis,
because you don't know whether they are going to sustain their brahmacharya for the rest of their life. तो समझने की बात है कि हमें किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि पढ़ाई लिखाई छोड़ो यहाँ पर आओ, क्योंकि ज़बरदस्ती हम कर रहे हैं पर हमें क्या पता हो कल को पूरा जीवन ब्रह्मचर्य रह पाएगा नहीं रह पाएगा. If they are going to sustain the brahmacharya for the rest of their life, no problem. But what if they decide to marry without skills? How are they going to fend for themselves and their families? तो अगर वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी रह सके तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, परंतु ये नहीं रह पाए और विवाह करना पड़ गया तो फिर कैसे अपना परिवार चलाएंगे? Yes, tell me how they are going to fend for themselves and their family. So, sometimes we hear something and we repeat it. But hearing something and repeating it could be very purifying. But that shouldn't be enough, because parrots can hear something and repeat it. तो कई बार हम कुछ सुनते हैं और वही दोहरा देते हैं. हाँ, अच्छा है, सुनकर दोहराना शुद्धिकरण करता है, परंतु साथ के साथ ये भी समझें कि तोता है वो भी सुनता है और दोहरा देता है. So we should not be paratologists. We should not be paratologists. तो हमें तोतालॉजिस्ट नहीं होना चाहिए. Can you interpret or translate that? ऐसे parrot in Hindi means तोता, so तोतालॉजिस्ट. What did he say? Parrotologist. Paratologist is like talking like a parrot without understanding anything and implementing any strategy in your life. तो तोते का मतलब हुआ कि बस बोल रहे हैं, जो सुना है बस बोल रहे हैं, उसके बारे में कुछ समझा नहीं, सोचा नहीं, बस बोल रहे हैं. You hear something, you do what is called selective listening. You pick the one that suits you. I don't want to have skills. Okay, Papa, Papa said, universities, they are slaughterhouses. No college for me. I'll just be brahmachari, okay? तो हमें सिलेक्टिव हियरिंग नहीं करनी चाहिए. सिलेक्टिव हियरिंग का मतलब है कि जो अपने पसंद की बात है बस केवल उसको सुन लिया. जैसे पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती और सुना कि प्रभुपाद जी ने बोला स्कूल कॉलेज है वो कसाई घर है, बस समझ लिया हाँ कसाई घर है तो मुझे नहीं जाना. तो हमें ऐसी हियरिंग नहीं करनी चाहिए. But if even apart from devotional life, not everyone out there is going to go to college. No. So some people may not really go to college, but we should not preach that people should not have skills. They should just depend on Krishna, because Arjuna had skills. तो भक्ति को छोड़िए, वैसे भी ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे कॉलेज जाते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, योग्यता विकसित करते हैं. तो आवश्यक नहीं है कॉलेज. अर्जुना के पास योग्यता थी तो ऐसे स्किल्स होने चाहिए बच्चों के पास. In fact, when you come to this movement with high profile talent, you are more useful in high profile services. यदि आप हाई प्रोफाइल टैलेंट या योग्यता लेके आते हैं तो आप अधिक सेवा कर सकते हैं. I'll give you an example. See, one of my followers, my personal assistant in New York, she's a white lady. When she approached me, she was a lawyer, practicing in the courts, high court, and all this stuff. When she approached me that I should be her guru, I said, you have to pay a price. She said, what price? I said, go get a master's degree. She said, she already has a master's degree. I said, okay, then you go get a PhD. And then as a lawyer, she argued back and forth, fighting. I told her, look, you want me now. I didn't come looking for you. You want me, this is my condition for you, because you have a lot of potentials to help this movement. She argued back and forth. Even some friends, some older devotees in ISKCON, they told her not to do it. But she went ahead. She finished the doctorate program. And within a short while, she got a service with the GBC.
She finished the program, and her family, who were against Krishna consciousness, the mother said, I want to be a servant of your guru. Sister, who is doing the master, said, I want to be guided by your guru. They were all against her initially. But now they've realized that ISKCON, it's a good place. They can encourage you for your skills, professionalism, skills development. It's a matter of integrating your skills and your sadhana. It's difficult. Because it's difficult, you say, no need. What is that? Bhaktivinoda is a good example for us. Bhaktivinoda Thakur, he's an acharya. He's an illiterate. What is this? What is this philosophy you're talking about? तो न्यूयॉर्क में एक भक्त हैं, मेरी निजी सेविका हैं, वो वाइट हैं, गोरी हैं, तो वो वकालत कर रही थी और वो मेरे पास आई कि मैं आपको गुरु के रूप में करना चाहती हूँ, कृपया मेरे को दीक्षा दीजिए, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। तो महाराज ने बोला कि अगर मुझे गुरु के रूप में चाहती है तो तुम्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या है कीमत, उसने पूछा। तो महाराज ने बोला कि जाओ और अपना लॉ में मास्टर्स करो। तो वो कहती है महाराज मैं तो ऑलरेडी किया हुआ है। तो महाराज ने बोला जाकर PhD करो। तो क्योंकि वकालत कर रही थी तो उसने तर्क किया, परंतु महाराज ने कहा देखो मैं तो तुम्हारे पास आया नहीं तुम्हें ढूंढते हुए, तुम आई हो कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो अगर दीक्षा लेनी है तो मेरी एक कंडीशन है कि तुम जाओ और PhD करो। और कई लोगों ने मना भी किया कि नहीं करो, क्या आवश्यकता है, परंतु महाराज बोलते कि मैंने बोला कि यदि करोगी तो मैं देख पाता हूँ तुम्हारे पास बहुत पोटेंशियल है और तुम बड़ी सेवाएं कर पाओगी। और कुछ ही समय बाद PhD किया और कुछ ही समय बाद वो GBC में अब बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं उनको मिल गई हैं, करती हैं। और उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके खिलाफ थे कि ये भक्ति कर रही हैं, पर अब परिवार के सदस्य, उनकी माता, उनकी बहन, सब लोग बहुत फेवरेबल हो गए हैं और महाराज से गाइडेंस लेना चाहते हैं, लेते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ISKCON में जो व्यक्तिगत स्किल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी उसको भी एनकरेज किया जाता है। So we should not use Krishna consciousness to suffer our children, to create trouble for our children. It's just like the boy who was serving the whole life a brahmachari, and then at some point in time he changed, he wants to have a wife. He did not have any skills. Now he has to go get some skills to be able to get a job, take care of himself and his family before it's too late. So why don't we prepare our children right from the beginning? Follow the Upanishadic statement. Nations and science side by side. It's right there in Upanishad. ईशोपनिषद में लिखा है कि अज्ञान और ज्ञान दोनों साथ साथ होने चाहिए, तो फिर क्यों हम छोड़ दें भौतिक शिक्षा इत्यादि को। Srila Prabhupada ki jai. Srila Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaja ji ki, Srila Prabhupada ki, Samved Gaur Bhakta Vrinda ki, Jai Gaur Premanande. So we are extremely grateful, Maharaj, for your wonderful insights on this important practical aspect of Krishna consciousness. तो महाराज का धन्यवाद करते हैं कि महाराज ने बहुत व्यावहारिक हमें शिक्षा दी और अपना अनुभव हम सबके साथ शेयर किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj ji ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Samved Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande।